and welcome to your session number 4 of French Revolution. Now, I hope you have already seen session number 1, 2, 3. And before starting this session, I would first introduce myself. My name is Shubham Pathak. I'm your master teacher at Vedantu for social sciences for both class 9th and 10th. And second thing that I want to do is to tell you how to find the session that you are looking for. So, bacha, mostly all the history sessions would be in 4 to 5 sessions. How you can find them with the exact session is just type the name of the chapter, like the French Revolution, and type for lesson 1 or session 1 or session 2, and you will get to the video that you require. Okay, so I had gotten a lot of queries from you. बहुत सारे मेरे पास doubts आए कि मैम हमें मिलती नहीं है कभी कभार videos, so I thought I would put it across. चलो, moving on, I hope and I know that all of you are safe and sound, and I still haven't gotten any of your comments telling me what you are doing in your quarantine. So please let me know in the comment section below कि कैसा जा रहा है social distancing. चलो, I hope कि ये जो 6 बजे वेदांतु का लाइव क्विज आता है उसका पूरा भरपूर आनंद उठा रहे हैं. अगर अभी भी नहीं देखा है तो एक बार तो देख ही सकते हो मेरे कहने पे. ठीक है, तो पिछले सेशन के मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ. नया सेशन लेने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर्स को टैली कर सकते हो. तो आंसर है 1793 से 1794. इसे रीन ऑफ टेरर बोलते हैं. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ट्रीजन. ट्रीजन का मतलब था कि राजा को इस रीजन की वजह से डेथ सेंटेंस दिया गया था लुई 16 को. एंड होमवर्क क्वेश्चन का आंसर था रिपब्लिक. फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया गया था फिर से. तो श्रेयन नरुला, रचना गौतम एंड राजेश विद्वानिया, वेल डन. सेशन 3 देखते ही आपने सही आंसर सबसे पहले दिया था. तो बच्चों, इफ यू आल्सो वांट टू बी ऑन द स्क्रीन of the next session, you just have to subscribe to the channel, और फिर आप भी क्वेश्चंस के आंसर सबसे पहले देके हमारे अगले सेशन की स्क्रीन पे आ सकते हो. ठीक है, चलो आज के सेशन में आपको ये इंडेक्स मिलेगा. आप ऑलरेडी जानते हो, एनसीईआरटी आप सबके पास है. तो चलो स्टार्ट करते हैं हम विमेन से. अभी तक whenever I have taught you about French Revolution, I have made one thing very clear to you, that political rights were given, sometimes to all the men, sometimes to the men who had property. But for women, political rights were never given in France. ठीक है, तो अब जानते हैं कि even after that, what was the role of women in the French Revolution. तो बच्चा स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करें ना, सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग विमेन वर वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन ऑल द इवेंट्स. वो सारे चीज़ों में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती थी, पूरा प्रोटेस्ट वगैरह करती थी. And they were hoping that because of their participation, definitely when the new government will come, when the revolutionary government will come, they will be rewarded with a voting right. ठीक है, तो ये उनको लगता था कि वो इससे ना उनके सारे इन्वॉल्वमेंट से प्रोटेस्ट में उनकी लाइफ थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी. और अच्छा, अब ये थी कौन सी औरतें. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ वुमेन आर वी टॉकिंग अबाउट हियर. So women of France of that era, you can divide it into mostly 2 categories, rich women, poor women. ठीक है, तो जो थर्ड स्टेट की women होती थी, women belonging to the third state, they were mostly uneducated women, right? And these uneducated women used to work outside their houses. अब क्योंकि uneducated थी, job training नहीं थी, job skills नहीं थे, so obviously they used to work in very small jobs like domestic servants, laundresses, florists, etc, etc. Now let's talk about the women who belong to wealthy families. तो ये वो women होती थी जो daughters होती थी या तो nobles की या wealthier members की society के, कभी कभी third estate के भी, तो जो wealthy लोग होते थे उनके घरों की औरतें भी होती थी. But the point is, इन औरतों के पास, the wealthier section of the society, the women who belong to this section, they still had exposure to education. इनके पास convent जाने का फिर भी साधन था, in contrast to the women belonging to the poor section of the society. So society कुछ ऐसे divided थी. But overall ही अगर देखें तो women had done a great job in the protest. They used to discuss their own interests, their own needs. They had so many clubs of their own, political clubs of their own, 60 of them actually. और उसमें एक बहुत ही famous club भी हुआ करता था, the Society of Revolutionary and Republican Women. And अगर आप मुझसे पूछो that ma'am, what were these women demanding? So they were only demanding equality, nothing more. They were just asking for equality. When voting rights were extended to the men, they were saying that please treat us equal and give us the same political rights. Okay, but obviously these women were not rewarded. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 का, and when revolutionary government came into force, then women were reduced
from their current status only. उन्हें passive citizen बना दिया गया. The citizens who need always permission from some other active citizen, ऐसा करार दे दिया गया women को. Obviously no political rights were given. Then अब ऐसा नहीं है that this revolutionary government did not actually do anything for the women. कुछ कुछ चीजें उन्होंने अच्छी की, but the point is political freedom was not given to women. So what is the point of doing something else? But चलो और देख लेते हैं. Let's look on to what these women were rewarded with, right? So point number one, schooling जो है compulsory बना दी गई थी, education compulsory बना दी गई थी. Forced marriages, women who were forced into some arranged marriages by their families, that was eliminated. Now marriage had become a social contract in which you enter with your consent, with your will, right? और हमारी revolutionary government ने divorce को legal बना दिया था. Now divorce not only husbands could take but also wives could also ask for divorce. This is actually brilliant. और मैं बताऊं तो they were trained for jobs because before they were not at all trained, so they used to take a very small jobs. Now they were being trained. Now अब वो artist भी बन सकती थी, small business women भी बन सकती थी. ठीक है, तो ये सब हुआ, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा. अब उसके बाद हो गई गवर्नमेंट चेंज, women and reign of terror. We are talking about when Robespierre came into the power. Now Robespierre obviously believed in a control and punishment kind of tactic, right? So he ordered for the closure of all the women club. उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि औरतों का पॉलिटिकल क्लब हो. उसने सारे क्लब्स बंद करा दिए, सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बैन करा दी. मोस्ट प्रोमिनेंट वुमेन जो हुआ करती थी उन्हें अरेस्ट कराना शुरू कर दिया, एंड मोस्ट ऑफ देम वर इवन एग्जीक्यूटेड एज वेल. तो ये चल रहा था विमेन एंड रीन ऑफ टेरर. नाउ राइट फॉर सफरेज फॉर विमेन did not just end there. It continued. It not only continued in France, but it continued in so many parts of Europe and so many other parts of the world. So ये जो है इस पूरी movement को हम international suffrage movement बोलते हैं. When I'm saying international suffrage movement, I don't mean that there was this one particular revolution in which all the women of the world participated. नहीं नहीं, ऐसे ये 3 phases में हुआ था. If you'll take social sciences in higher classes, you'll get to study about it. This is known as international suffrage movement, international movement for voting rights for women. Late 19th century or early 20th century में चला था. And France की बात करें, where women were asking for political rights in 1791, they were given it 1946. Imagine something that the men had since I don't know when. Women had to ask for it, struggle for it. So there goes the story of the women. Now let's talk about something even more serious: abolition of slavery. So bacha, we are talking about an era where some humans were not treated like humans, they were treated like animals. For some powerful men were treating some not so powerful men like animals, like slaves. And that is known as slavery. So let's talk about it. Okay, colonies in the Caribbean, मतलब जो Caribbean Sea की जो colonies हैं. अच्छा, colonies क्या होता है? सबसे पहले जो बिग यूरोपियन नेशंस होते थे ना, वो छोटे छोटे नेशंस पे अपना कब्जा जमा लेते थे, डोमिनेशन कर लेते थे और उन्हें अपनी कॉलोनी बना लेते थे. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, ब्रिटेन केम टू इंडिया and made India its colony, right? That is why we call Britishers as colonizers. Same way. So जो कैरेबियन सी की कॉलोनीज थी, जैसे कि मार्टिनिक हो गई, गोडालियोप हो गई, सैन डोमिंगो हो गई, these kind of colonies were very naturally rich, resources बहुत थे, और ये बहुत अच्छा साधन थी टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी जैसे प्रोडक्ट्स के लिए. पूरा यूरोप इंडिपेंडेंट होता था. But Europeans were not ready to go there and work. They wanted the natural resources of these colonies, but they did not want to go there and work. Why? Because who wants to give up their own luxuries, right? कौन अपने घर का ऐशो आराम छोड़ के किसी डेवलपिंग नेशन या किसी पुअर नेशन में जाके काम करना चाहेगा, राइट? तो लेकिन अब सामान चाहिए, नौकरी भी नहीं करनी है, वहां पे काम भी नहीं करना है, तो ऑब्वियसली यू वुड हैव टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स. दैट समथिंग एल्स बिकेम योर स्लेवरी. Due to the shortage of labor, Europeans came up with this concept, right? And mostly in the plantation, tea plantations we are talking about. Now this triangle got developed between Europe, America and Africa. This triangle is known as triangular slave trade. It began in somewhere around 17th century and went on for 100 or more years. पता है क्या होता था? छोटा सा एक example बताती हूँ. Let's take example of the France because we are studying about French Revolution. So there were two port cities known as Bordeaux and Nantes, जो कि जहां से शिप निकलती थी अफ्रीकन कोस्ट के लिए, ठीक है, कोस्ट के लिए. तो वहां से शिप निकलती थी पोर्ट एरिया से फ्रांस के, और शिप
जाती थी सीधे अफ्रीका। वहां पे क्या होता था, देयर वुड बी अ पर्सन हु वुड बी सेलिंग पीपल, इमेजिन सेलिंग अफ्रीकन्स टू द ओनर्स, टू द स्लेव ट्रेडर्स। अब वहां से स्लेव बेचे जाते थे, शिप पे बिठाए जाते थे, एंड शिप चलती थी 3 महीने के लिए, एंड यू नो दे वर पैक्ड टाइटली, दे वर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स, दे वर ट्रीटेड लाइक स्लेव, दे वर नॉट ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट और डिग्निटी और इवन विद सम ह्यूमैनिटी। और फिर जब वो पोर्ट एरिया पे आ जाते थे, यूरोप में आ जाते थे, फ्रांस में आ जाते थे, देन दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर्स, एंड plantation owners used to keep these slaves as bonded labor। कुछ भी काम करवाया जाता था, कोई सा भी इन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता था। एंड दिस एक्सप्लॉयटेशन, yes, it helped European to become more and more powerful and to become richer also। तो यूरोप का सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली स्लेव ट्रेड पे बेस्ड था बच्चों। Do let me know in the comment section what you feel about it। Now let's talk about end of slavery, थोड़ा happy topic की बात करते हैं। So 1794 when the Jacobin regime came, they freed all the slaves। They said कि freedom सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है, फ्रेंच सिटीजन्स के लिए नहीं है, फ्रांस में जो कोई भी रह रहा है सबके लिए है। तो उन्होंने सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया और बोल दिया कि अपने घर चले जाओ। बट इट वॉज वेरी शॉर्ट लिव्ड, ओनली फॉर अ डेकेड। देन व्हाट हैपेंड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी फ्रांस में, नेपोलियन आ गया था पिक्चर में, नेपोलियन री इंट्रोड्यूस मोनार्की एंड ऑल्सो नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी ऑल्सो। और पता है फाइनली कब जाके एंड हुई, 1848 एबॉलिश हुई थी स्लेवरी कहीं जाके। तो काफी चला स्लेवरी और काफी एक्सप्लॉयटेशन हुआ कॉलोनीज का, ये हमने अब पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। बच्चों देखो, कभी भी कोई रेवोल्यूशन होता है ना, whenever any war happens or whenever any revolution happens, social life is definitely affected, day to day lives are also definitely affected। now same concept you have to apply in the French society। अब फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रहा है, इतने पॉलिटिकल आइडियाज चल रहे हैं, फिलोसफर्स बातें कर रहे हैं, तो चेंजेस तो आने ही थे। पॉइंट नंबर 1 इज लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ये जो दो चीजें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से जरूर सीखते हैं ना, दिस लिबर्टी एंड इक्वालिटी वाज नो लॉन्गर ओनली इन पॉलिटिकल स्फीयर, दिस हैड seeped into the everyday life also। censorship, suppression of expression, censorship had been completely abolished, and declaration of the rights of man and citizen, जो हमारे fundamental rights की तरह सुनाई देता है, ये तो बहुत ही beautiful चीज हो गई थी ना। equality and liberty had definitely seeped into the society, and freedom of speech was there, freedom of expression was there, and most importantly freedom of press was there। अब सारे अपोजिंग व्यूज भी आते थे, जिसे राजा को सपोर्ट करना है, राजा का पॉइंट ऑफ व्यू डालना है, वो पॉइंट ऑफ व्यू डालते थे, जिन्हें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू डालना है वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू डालते थे। Plays, songs, festive procession, everything was happening because there was no censorship, there was freedom to people, right? So this used to attract a lot of people। In fact जो हमारे philosophers हैं, they also could spread their ideas only because थोड़ी सी लीनियंसी आ गई थी फ्रेंच सोसाइटी में, थोड़ा फ्रीडम आ गया था, लिबर्टी आ गई थी। ठीक है, so this was all about your French Revolution। Children who are watching this video and have not watched the previous ones, I would suggest go through them also। You will get the entire summary of the chapters, and with every video I have tried to give most important 1 mark questions also to you। So don't forget to comment। आज भी मैं दूंगी, पर उससे पहले एक डेट लाइन भी आपको दे देती हूँ। ये डेट लाइन जो आप देख रहे हो ना, यू जस्ट हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डेट लाइन एंड यू विल बी सॉर्टेड 1 night बिफोर द एग्जाम। ओके, ये पूरी डेट लाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम किंग लुई बिकमिंग द किंग ऑफ द फ्रांस टू योर विमेन नॉट गेटिंग और विमेन फाइनली गेटिंग वोटिंग राइट्स इन द फ्रांस। तो ये पूरी डेट लाइन आपको हमेशा काम करेगी। नाउ इट्स टाइम फॉर योर 1 mark क्वेश्चन दैट यू कीप वेटिंग फॉर। अगेन जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है इनके आंसर्स, और जो सबसे जल्दी बताएगा उसको अगली बार हम सेशन में कंग्रेचुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच लेगेसी टू द वर्ल्ड इज व्हाट। 4 ऑप्शन है, यू हैव टू लेट मी नो। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हेन डिड women finally win the right to vote in France? Easy peasy, I just told you 5 minutes ago। So this is your question। There is one homework question also। Your homework question is, who reintroduced slavery in France? Reintroduce is the word, ठीक है, 1804 में। So think about these questions, write your answers below। I will see you next time। Please think about VSET also। Registration तो इसका free है बिल्कुल। Don't forget to subscribe to the channel, how to make notes, how to study, how not to get bored। For every question you will have a video here, so don't forget to subscribe। I'll see you next time। I hope you guys are doing well। Till then, keep smiling। Bye bye।